All right. So we go to the Kepler's law. First law is the law of orbits. See if you can write today. आज चल गया वो. नहीं नहीं, आज चल गए। कोई थी सेटिंग जो चेंज हो गई अपने आप. हाँ, वो कुछ तो जूम के कुछ तो बग आ रहा होगा। नहीं, कोई सेटिंग थी अपने आप बदल गई थी तो चेंज करनी पड़ी मुझे. अच्छा, आपके साइड से हुआ था इशू? यस. ओह, तभी मैं नहीं देख पा रहा। आज देख पा रहा हूँ। ये देखो। This was a major discovery. ओके। The elliptical nature and that fact that sun is located at one of the focus. ठीक है। This is called major axis. ठीक है। And this is called the minor axis. So this point P and A, these are called as perihelion and aphelion. इसके ऑर्बिट में प्लेनेट के जब ये ए पे होता है तो इट इज ऑन एफिलियन. जब पी पे होता है तो ये पेरिहिलियन होता है. एंड which means they are farthest and closest. So perihelion, you're closest. Aphelion, you're the farthest. जो प्लूटो और मरकरी हैं, two excellent examples where the orbits actually are very elliptical. जो प्लूटो नेपच्यून तो बहुत एंड बड़ा होता है। हाँ, नेपच्यून एंड वीनस सर्कुलर. परफेक्टली सर्कुलर। And rest are somewhat slightly elliptical.
न्यूटन तक तो यही था कि everything is circular, so there was not much of a contest. But I think after Kepler came in, हम्म, he changed तब thinking. सॉर्ट कर दिया उसने। Second, the law of areas. इसी पे न्यूमेरिकल आता है. So the area vector traverses same area in same time interval. Okay, so if you have a ellipse and the so in the same time interval, the this vector, areal vector will cover. जैसे कि ये एरिया कवर हो रहा है किसी टाइम इंटरवल में, दूर होने पे भी उतना ही एरिया कवर होगा. The same time interval, so if this area swept as it moves, and this area is same in the same time interval, right? So rule is t square is proportional to r cube. ठीक। So the rule is the square of the period of revolution is equal to the around the sun is proportional to the cube of semi-major axis. Okay, and so t square is equal to kr cube. I think the third law is the law of area तो यही था यार. हाँ, sorry, I have mixed it up. Sorry, I have told you both the laws, third and second. See, ये जो अभी t square is proportional to r cube is basically the third law, the time period, the law of periods. So this is law of periods. This has nothing to do with law of areas. Okay, so third law है केपलर का ये. इसका इस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है. This is a separate law. I think I mixed it up. So law of area states that the radius vector, which is this, the radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal area in equal intervals of time. That is the areal velocity, the velocity of covering area. Areal velocity, which is area covered per unit time, area covered per unit time of a planet around the sun is constant. Law of areas. So this area, which is, for example, this is S, C, and D. This area is equal to this area if the time interval is same from C to D and A to B. So areas will also be equal. So areal velocity dA by dt, area covered per unit time, is a constant.
Okay. And third law, of course, is the law of periods, that the square of the time period of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of semi-major axis. So this is the semi-major axis. Second law. Third law. Any doubts in any one of these? हाँ सर, Pretty straightforward. मुझे समझ आ रहा है. इसमें क्या नतीजा, what is the inference you can draw from the laws of area? This is very mathematical type of thing, right? This is more about shape and all of that. But the crux is this. This tells you something, that suddenly when the planet comes closer to the sun, it moves faster. So speed बढ़ जाती है उसकी ऑर्बिट की, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम तो उतना ही है और रेडियस वेक्टर छोटा है, तो उसको एरिया कवर करना चौड़ा, जैसे कि दिख भी रहा है, दिस इज ब्रॉडर, राइट? दिस इज मच ब्रॉडर, क्योंकि आर इज वेरी स्मॉल, बट यहाँ पे आर बहुत बड़ा है, इट्स वेरी नैरो. सो ये थोड़ा सा ही ऑर्बिट कवर कर रहा है, बट इसको बहुत तेज कवर करना पड़ता है टू इंश्योर दैट इट इज ऑल्सो एबल टू स्वीप the same amount of area. So which means when you're closer to the sun, your orbital velocity is very high. Okay, so closer to the sun. So whenever a planet is moving around the sun in an orbit, it has variable velocity, and the velocity closer to the sun is high. So this is an important conclusion for you. Closer to the sun you are, higher is the orbital velocity. That is the only way you will have same area. Otherwise, if you also move very slow, maybe you will just reach here, and your area which is swept becomes very little. So इतना सा ही area रह गया बस, right? So you won't be able to match this rule, the law of areas. You can't have such a narrow area. For you to be able to, achieve the same area as this, you need to move faster so that your area swept is also bigger. समझ आ गई बात ये? हाँ जी. All right. Now let's do some derivations. Sometimes in school they may ask you a small derivation. डेरिवेशन Essentially, ही पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते. मैंने तो नहीं देखा यार अभी तक जितने पेपर आए हैं कोई डेरिवेशन आई है. नहीं आई, बहुत बहुत आई है. एक भी नहीं आई. पेपर खोल के दिखा दो यार कौन कौन सी डेरिवेशन है. चलो जब शेयर बैंकिंग ऑन ऑफ टेलीग्राम. बैंकिंग ऑफ सारे बता न्यूमेरिकल दीजिए. हैं. असाइनमेंट इज ऑल न्यूमेरिकल. नॉट अ सिंगल डेरिवेशन. नॉट अ नॉट सिंगल असाइनमेंट, डेफिनेशन ऑल्सो. द टेस्ट. टेस्ट दिखा दो यार पुराना कोई जिसमें डेरिवेशन है एक आपको भी. मैंने भेज रखे हैं सारे. मैं खोल के देख लेता हूँ उसके अंदर. भेज रखे हैं तो. मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई भी. सर इतनी सारी तो थी, बैंकिंग ऑफ फ्रूट्स की जस्ट थी. एक सेकेंड. एक थी तो इतनी सारी कैसे होगी 70 नंबर में से? बट एक को इतनी सारी कैसे बोलते हैं? नहीं, एक भी नहीं, मतलब और भी थी. और कौन सी थी? वही तो पूछ रहा हूँ कौन सी. एमएलपी क्या होता है? पता नहीं. तुमने ही भेजा एमएलपी लॉज ऑफ मोशन. आई एम जस्ट चेकिंग योर पेपर. क्योंकि मैंने अभी तक बहुत बच्चों से सुना है. मैं उनको बोलता हूँ दिखाना जरा. दो दो एक डेफिनेशन नजर आती है, एक डेरिवेशन नजर आती है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं पेपर में. और असाइनमेंट उठाओ तो पूरा न्यूमेरिकल होता है. एक भी उसके अंदर वो नहीं होती डेरिवेशन. और जिससे पूछो डेरिवेशन बहुत आती है. मतलब दिखाना तो सही कहाँ पे है. एक गिना पाता है, उसके बाद कोई गिना ही नहीं पाता. न्यू डॉक्यूमेंटेशन, न्यू ये 3 मार्क्स डॉक्यूमेंटेशन. में आती है. दो दैट्स आई ऑल. थी डेरिवेशन. दैट्स ऑल. बस. मतलब सात ये नंबर बोलो ना. की. हाँ, 70 में से 7 नंबर इज नॉट टू मच ना.
ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, 63 मार्क्स के नहीं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होते भी हैं। नहीं उतने, क्या कहते हैं उसका, आते थ्योरेटिकल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। रीजनिंग इज नॉट थ्योरी, के रीजनिंग इज रीजनिंग, बट 1 मार्कर। Derivation is rectification and reasoning is not rectification. Reasoning is actual science. Anyway, that is not the point. इधर derivation इसलिए important है क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा वो कुछ मैथमेटिकल है और उसमें एंगुलर मोमेंटम की इन्वॉल्वमेंट है इसीलिए. But don't go with this impression that you're going to get derivations in paper. Most of your paper is going to be straightforward case of numericals, reasoning assertion, case study. This is what the new pattern of board is. There is nothing called as 1-2 definitions. कोई डेरिवेशन नहीं आई बोर्ड में, पिछले मैंने 5 साल के पेपर चेक करे हैं, एक एक भी नहीं आई. There is nothing to derive now. It's all understanding based paper. Reasoning assertion, paragraph, 1 मार्कर, 2 मार्कर, सब्जेक्टिव के नाम पे कुछ नहीं है. Okay, so let's say you have to prove the derivation of all the 3 laws of Kepler. Okay, so first law of planetary motion. Let's say first law. What was the first law? That the planet moves in the form of a elliptical orbit. That was the first law, right? यही हुआ ना? First law of planetary motion. The planet moves around the sun in an elliptical orbit situated at one of the, and sun is situated at one of the 2 foci. Okay, so इसका है, if draw an ellipse, then draw a sun. Okay, and then draw a vector. Okay, and then draw. This is F. This is V. V planet. Sun. Okay, so F is equal to G M sun M planet upon R cube into R. Okay. This is the mass of the sun. This is mass of the planet. R is the vector joining the mass planet and the sun. That is R. Force direction is inward, radial. You can see F and R are opposite. So R is in this direction and F is in the other direction. Okay. So the torque which is being applied on the planet. Planet is here, force is getting applied. अगर ये axis of revolution है, तो it is R cross F equal to R cross G M sun MP divided by R cube R. R cross R is 0. So the net torque on the planet is 0. That means the rate of change of angular momentum is equal to 0, which is only possible if angular momentum is equal to 0. Constant.
What is the direction of L? It is perpendicular to both R and P. Obviously, P is here. R क्रॉस P. दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है R क्रॉस F, दूसरा होता है R क्रॉस P. ये तो टॉक का है। L का फॉर्मूला होता है R क्रॉस P, ये MV, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर R क्रॉस P, वेक्टर प्रोडक्ट. So L is perpendicular to the direction of plane of R and P. Okay. Now the central force under the action of which the planet moves varies as square of the distance between the planet and this orbit is an ellipse. And this orbit is ellipse. Note this very, very carefully. Angular momentum is conserved. So when r is small, that means you're closer to the sun, your velocity increases. Any doubts? आवाज ही नहीं आ रही. नहीं नहीं. जो ये derivation है, इसमें what has not been done is the fact that we have not proved that the orbit is elliptical. If you notice, वो नहीं प्रूव करा. एलिप्स में से उसका फॉर्मूला क्या होता है? x square by a square plus y square by b square is equal to 1. इसलिए ये डेरिवेशन आएगी भी नहीं, क्योंकि deriving Kepler's law needs too much knowledge of elliptical orbit की कॉनिक बहुत अच्छी सेक्शंस. नॉलेज चाहिए, तो वो फिर आनी नहीं है. इसीलिए ऑब्वियस. इसको एलिप्स प्रूव करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट एक फैक्चुअल ये पता होना चाहिए जो अभी हमने करा है. और जो बात है दूसरी, इफ यू नोटिस द, डोंट वरी दैट देयर इज नो मेंशन दैट लिखा की डेरिवेशन है, लेकिन एक्सप्लेन कर दिया एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन को, और कहीं नहीं साबित करा कि ये शेप जो है ये एलिप्टिकल है. सो ये हमारे कोर्स में है भी नहीं टू प्रूव दैट इट इज, बट ये फैक्ट दैट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड ये हमारे कोर्स में है. वी शुड नो दिस. L is constant. This we should know. ठीक है. The second law, delta A by delta T is constant, is also to be understood. So if you have, let me just draw second law से क्या conclusion. तो सब, let's not call it derivation. Let's say some discussion around Kepler's law, further discussion. क्योंकि derivation में confusing is कहाँ दिखाया है कि orbit ये ellipse है, तो नहीं दिखाया, तो कोर्स में ही नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे. होता है प्रूफ, लेकिन कोर्स में नहीं है. Impossible to do it with the knowledge we have. Okay. Further discussion. So this is your elliptical orbit. This is your area sweeping wala statement, that the area swept is equal, or
So here the velocity direction. Let's see what is the conclusion we can draw from area velocity vector यहाँ है, tangential इसका यहाँ पे है, ये planet है. Area swept is A. So let's say this is the ये area swept है. Okay, so let's call it delta A area, and this is the force, central force. ये sun focus पे sun पड़ा हुआ है, sun, and we know the torque is dl by dt, and dl by dt is 0 because angular momentum is conserved, so L is equal to constant. इसका conclusion ये था कि if you are closer to the r is small, then your momentum will go up, which means velocity will go up. इसका भी वही है, same almost, but इसमें see, let's see dA by dt. So ये जो area है पिंक रंग का, delta A, right? Let's treat that कि this is a straight line, so almost a straight line, and this is 90 degree. So half base into height. So half base into height, r into this base, p dash, r into p dash is, and we know that delta p dash is equal to linear distance moved with velocity v, so v delta t. वैसे तो circumference का हिस्सा है, but p dash is so small, yeah, it is so near that we can treat it as a straight line. That is why we have taken it as a base of a triangle, right angle triangle. तो r is perpendicular है, तो ये वाली situation, बट हमने इसको 90 डिग्री ले लिया और इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया ऑलमोस्ट. pp dash is equal to v into delta t, and therefore delta a is equal to half into r multiply by v into delta t. ये क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी ये मल्टी, हाफ बेस इंटू हाइट, pp dash delta is equal to half v into, तो ये हमारा बन जाएगा हाफ और डेल्टा a is equal to delta a is equal to half, divide and multiply by m, so r into mv delta t by m. डेल्टा टी को यहाँ ले आते हैं, भाई एरियल वेलोसिटी आ गई, rate at which the area swept has to be constant, and this becomes half r multiplied by p, product, not vector product, normal product. नहीं, ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है. अच्छा, एरिया को भी इसने इसमें लिखा है r क्रॉस pp. दिस इज अ साइन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. हाफ बेस इनटू हाइट. वेक्टर प्रोडक्ट में आंसर आ जाता है ट्रायंगल का. वेक्टर प्रोडक्ट से हाफ a क्रॉस b. इफ देयर आर टू वापस वेक्टर्स, जाते हैं. एक मिनट, अगर मेरे को पैरेललोग्राम याद आ रहा है, a क्रॉस b इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड. हाफ a क्रॉस b इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. एक मिनट, हाफ a into b वेक्टर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. मेरे ख्याल से तो ठीक ही होता है, हाफ a क्रॉस b होता है. हाफ a क्रॉस b, यस. वेक्टर एरिया बोलते हैं इसको, यस. तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ही है, प्रोडक्ट नहीं था. दो वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है. pp dash is a vector and r is a vector joining the sun and the planet's position. Both are r, ये भी r है और ये भी r है.
सो दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट तो ये आ गया आर क्रॉस पी, ये हमें मालूम है एल होता है. सो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, द एरियल वेलोसिटी, एंड वी नो आर क्रॉस पी इज nothing but L, and it is a constant. So delta A by delta T also is a constant. अच्छा नीचे M लिखना मैं भूल गया. So you can get a numerical where they can say the angular momentum which is fixed for a planet is known to you. The mass of the planet is known to you. And they can say with the help of this calculate the areal velocity. So areal velocity is equal to half L by M, which you couldn't calculate. You got a qualitative view from Kepler's law that areal velocity remains constant. The area swept per unit time is constant, but you did not get a quantitative view. So this is your quantitative view, which means the algebraic or the formula to calculate if it is a constant, how much is it? It's linked to angular momentum by L by 2m. That's the answer. Quantitative expression for areal velocity. And delta A by delta T is, L is a constant because the torque is fixed. So dl by dt is also fixed. Torque on a planet is zero. Rate of change of angular momentum is zero. So L is a constant, sorry, not zero. L is a constant and dA by dt is also a constant. Important conclusions. वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेरिवेशन में था. हाँ, कह सकते हैं. And then मुझे लगता है मतलब I don't know, they will ask you this level of detail or not. स्कूल में कराया है ये? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. Kepler's law तो आ रहा है, but have they gone in this level of depth of dA by dt calculations? Okay, prove that. मैं तो इसलिए करा रहा हूँ कि इकलौती आई है यार. डेरिवेशन That तो इससे छोटी. मतलब ये तो है, क्या कहते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर. that is definition. हाँ, वो है उसका थोड़ा बहुत ठीक है. है, ज्यादा नहीं है. ठीक है, ठीक है, हमें करना है क्योंकि जेई में होते हैं क्वेश्चन एरिया स्वेप्ट के ऊपर, so we should know. Not that we will spend too much time on this, but when the time comes to थोड़ा सा लेवल बढ़ाने का, तो it will be very easy for us to understand what we are doing. ये तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा. Okay, so let's say now using Newton's law, okay, calculate the Kepler's third law, sorry, the time period law, third law of planetary motion. Okay, so we know that Newton's law use करके Kepler's law लाना है. mb square by r is equal to gmm by r square. Centripetal force is equal to this. V orbital is equal to this. But orbital velocity is given by circumference divided by the time period. Substitute it here. So 2 pi r square by t square is equal to gm by r. T square is equal to 4 pi square r cube by gm. T square is proportional to r cube. Proved. Centripetal use करा basically circular motion ही. This is circular motion statement. This is also circular motion statement. V की वैल्यू यहाँ डाल दी है, 2 pi r square कर दिया है, और अपना t square proportional to r cube आ गया, which is nothing but Kepler's third law. So if you do t square is proportional to r cube, so t square is equal to k r cube. The value of k, which is a constant, is 2.97 into 10 raised to power 19 second square meter minus cube. Second square per meter cube.
ठीक है. Okay. So now, if we were to broadly summarize it, what we have studied is the angular momentum of a planet is constant. Angular momentum is constant. L is equal to mvr is equal to constant. Law of area. Law of area. Okay, so delta A by delta T is also a constant. Then law of period. P square is proportional to r cube. And so if you want to, this is interesting because it is applicable to every planet. So if you have Jupiter, so you can write this for Jupiter. It is applicable to Earth as well. If you divide these two, you can compare the time periods and orbital lengths, orbital radius. T is in seconds. R can be anything. Generally meters ही होता है. Because the constant we have written is meter and second square. Angular momentum is constant, law of area, second law, and this is third. So तीनों को शक्ल भी मिल गई. This though is not associated with any law. Generally, it is associated with the first law. Though first law only states it's a elliptical orbit and stuff like that. But फिर भी इसको first law से associate करते हैं statement को. इससे ये आ गई थी. डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का वैल्यू आ गया था ये. हाफ एल बाई 2. Law of periods could be derived from Newton's second law also. Sorry, Newton's gravitation law, not second law. Okay, I'm going to the next page. Let's do some numericals now. Numericals. Numericals. Just give me 1 second. Hello. Hey, hi, Husna. How are you? Yeah, am I audible? Yes. Not a good time. Not a good time. Okay. No, no. Two. No, it can be 12:30 also. Two is fine. No, not available. ठीक है. I'll wait. Thank you. Yes, sir. Just give me 1 second. We were doing numerical practice. Law. Numerical practice.
Orbital velocity, polar satellites, geostationary satellites, state the Kepler's law. Kepler's law. Okay. Yes. Simple numerical, straightforward. Are we on the next page by any chance? Yeah. हाँ जी. Machine. अर्थ के ऑर्बिट का एरिया क्या होता हम्म. है? रेडियस अर्थ के ऑर्बिट का. Let it be R. क्यों? R मान लो बस. R E कट जाएगा 1.52 है. उसमें भी R क्यूब आ जाएगा, उसमें भी R क्यूब आ जाएगा. अर्थ का तो पता ही है, टाइम पीरियड 365 डेज है. तो वो डेज में ही रहने देना. आर को, टी को, सॉरी. उसके भी डेज आ जाएंगे मार्स मार्स के. टी मार्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर मार्स क्यूब. तो ऐसे लिख लो लाइक T2 स्क्वायर हम्म. आर अपॉन मार्स, आर अर्थ. ऑन आर मार्स या. क्यूब अपॉन आर ई क्यूब. यस. तो T2 by T1. हाउ विल यू टेल द अदर पर्सन व्हाट इज टी टू एंड वन? So T2 is like यूज time एम ना. taken. इतने सारे सब्सक्रिप्ट. T1, M, E, चार बन गए. ऐसे लग रहा है चार हैं इसके अंदर इन्वॉल्व. You should have written TM and T Earth. Would be easy for the other person to understand. Yes, much better. ठीक है. 1.5 का क्यूब आ रहा है. बट निकालना क्या है? हमें तो अब डेज में निकालना. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर इन डेज? डेज. टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड. TE is how much? 365, right? हाँ हाँ, वो तो मल्टीप्लाई कर देगा उसको. इधर ले जाओ ना फिर 365. फिर उसका रुक स्क्वायर जाओ, रूट, अभी क्यूब रुक रूट. जाओ, अभी रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ मैं उसको. ओके, टेक योर टाइम. नो रश. सर 657 days.
हाँ जी। 657 days approximately. The length of the Martian year. ओके, काफी लंबा चलता है, डबल ही है। 2 साल में आपको सिर्फ एक बार ही बर्थडे आता है। केक का खर्चा बच गया। अरे केक का खर्चा बच गया भाई। उम्र भी केक कम हो गई, केक क्या? छोटे ही रहेंगे। 657 दिन, ह्यूमन लाइफ घट के 40 साल रह जाएगी। हाँ। भले 40 साल का ही हूं मैं, सिर्फ बोले यार 40 साल का है तू यार। अर्थ पे तो तेरे जैसे बंदे 80 साल के दिखते हैं। 40 साल की उम्र में फिर बुढ़ापा आ जाता है। हम्म। तो सबसे बुरी चीज तो कि दो 60 साल प्लस, 60 प्लस के बाद आता है। 40 to 60 इज कॉल्ड एज मिडिल नहीं, एज। 40 प्लस इन लाइक मार्स। ओह वो तो लाइक 75। नहीं, नो नो, इट्स लाइक 30 इयर्स की एज में आ जाता है मार्स में तो। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 60। ऐसे मार्स पे तो हम रह भी नहीं सकते उसके वजह से। यस। अरे फोबोस एंड डेमोस, क्या है डेलमोस। ये चीज? डेलमोस है वो, डेमोस। मून्स भी होते हैं इसके? हम्म। अच्छा। हमारे मून के भी मून्स हैं। हमारे मुंह। जो अर्थ का मून है उसके भी मून्स हैं। अच्छा जी, ये दे रखा है। सब सब सैटेलाइट। Satellites. सैटर्न के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मून्स हैं। प्लूटो का एक है, नेपच्यून के दो हैं, जुपिटर प्लूटो के का भी 5 हैं, रखा मार्स के 2 हैं। डे, डेलमोस नहीं, वो डीमोस है, सॉरी। हाँ वही मतलब डायमोस डेमोस होते हैं। डेमोस ही है। यू राइट। ठीक है। 7 8 64 20। mv² / r इज इक्वल टू gmm/r, और है क्या? और यू वांट टू अप्लाई समथिंग एल्स? नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। खुद केपलर कर। तो नहीं लगेगा कोई? नहीं, केपलर कुपलर तो नहीं लगेगा। मैं खुद। टाइम पीरियड वाला लगेगा। पहले और मैं इसको दो का सॉल्व। कंपैरिजन भी नहीं है। समय भी कर रहा सेंट्रीपिटल हूँ इसको। फोर्स। कर रहा हूँ इसको। ओके। अच्छा। सेकेंड्स।
Done. ठीक है, गुड वर्क। Okay, figure. Where is the figure? फिगर इज देयर, वही एपिलियन वाली फिगर यार, जो देख देख दो खाता दो। माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस। At perihelion, which means closest to the sun. So the velocity here is known, Vp, and the sun planet distance be Sp and Rp. Relate Rp and Vp. The sun planet distance Sp and Rp. Where is R in this? To the corresponding aphelion RAV. Acha. So this is the distance and this is the velocity at P. This is the orbital distance, radius, and this is the velocity. Okay? So we know the angular momentum is going to be constant. So m rp vp is equal to m ra va. The angular momentum is same at P and A. हिंट देना। बता तो दिया. The angular momentum is constant. ठीक The है। angular momentum at A will be mva ra, and the angular momentum at P will be mvp rp. La is equal to lp. So mva ra is equal to mvp rp. Relate कर लिया. ra into va is equal to rp into vp. ठीक है। Will the planet take equal time to traverse? Traverse का मतलब क्या होता है? Cover, sweep, अच्छा, BAC, cover BAC and BACN. So and C, CBP. yes, They will. दोनों बराबर ही होंगे हाँ, क्योंकि दोनों बराबर है ना बाई चांस. हाँ जी। बिल्कुल ये मिडल में है ना BC, तो दोनों साइड का एरिया सेम ही हुआ ना. हम्म। तो जो एक एरिया मिनट, वेक्टर, एक मिनट, BAC कवर कैसे होगा? बट वो मैं प्रूव करना होगा ना, लाइक वो। नहीं नहीं, वो तो DA/DT कांस्टेंट रहता है ना यार. हाँ, वो तो ठीक है। एक मिनट, BAC कहाँ पे है? BAC ये है और CPB कहाँ पे है? ये हाँ जो ये रहा. BAC ये रहा। और CPB ये रहा. हाँ, हाँ, सो आंसर इज यस, फिगर के CPB. हिसाब से तो लाइक ये इक्वल ही रहेगा। बिकॉज फिगर ही ऐसे दे रखी है। बिकॉज ऑफ
second law of Kepler. The area swept is equal in equal time intervals, क्योंकि इसको जो टाइम लगेगा कवर करने में वही उसको बीपीसी को बोला एज पर द, और उतना ही इधर टाइम लगेगा, आधा आधा. तो एज पर द सेकंड लॉ। हाँ, so if the time is same, the area swept is same. ठीक। Tell me if you have a doubt. Clear, right? हाँ जी। Perihelion. I think we did this or not. ये मैंने करा था. कौन सा? This one. देखो। I think we did it. यस। क्या? करा है ना, मुझे लग रहा था कि यार ये अरे आईटी में भी आ रहा है क्या बात है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हमने किया है ये। याद आ गया मुझे, करा है.
This is bit mathematical in nature. So if you assume the sun is located here, right? हम्म, ये क्या बना दिया? ये Okay. So the closest distance you have is this, right? So the minimum distance is this one, हम्म, and the maximum is this. ये With Perihelion, Aphelion, right? हम्म, But you know t square is proportional to r cube, right? यस What is r? R is the average orbital length. R1 प्लस R2। हाँ, अरे सही है था। तो t is proportional to 3/2. ठीक, 3/2 नहीं, या फिर R1 प्लस R2 मतलब अपॉन स्क्वायर टू रूट हो जाएगा रेस्ट ना क्यूब का. पावर, रेस्ट पावर 3/2। हाँ, right. That's what I meant. Okay. Any जब मैं एक मिनट असाइनमेंट चेक करता हूँ उसमें कोई क्वेश्चन आया हुआ है केपलर्स का. नहीं, केपलर्स का कोई क्वेश्चन नहीं दिया तुम्हारे स्कूल ने. दैट वाज द weirdest थिंग. आउट ऑफ अपेलियन एंड पेरिहेलियन। यू नो द डायग्राम. इट्स देयर, ऊपर भी बना हुआ है. पेरिलियन इज द नियरेस्ट. सो व्हेन यू आर द नियरेस्ट. द स्पीड इज मैक्सिमम। यस. व्हाई? Because the dA by हाँ dt is same, right? Area has to be जी, same area needs to be swept, which is यस only possible if you move very fast. With a small radius, the only way you can cover same area is by moving fast. And also, if you यस। notice from law of angular momentum, because r is very small, v हम्म, has to go up. ठीक। वैसे जो जो प्लैनेट्स हम सन के लाइक क्लोज होते हैं, Hmm. वो भी काफी तेज, लाइक काफी So फास्टली you're रिवॉल्व referring to, करते हैं। see, you're referring to g mm by r square is equal to g mm by r square is equal to mv square by r, right? हम्म, So I can write v as 2 pi r by t का square. So g mm by r square is equal to 4 pi square r square by t square. So वो फास्ट घूम रहे हैं या स्लो घूम रहे हैं, राइट? यू मीन द टाइम पीरियड इज लेस. हाँ सो टाइम पीरियड स्क्वायर इज 4 पाई. एक ये भी आर कट गया था. 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम. So time period is depending how far you are and the mass of the sun. So mass of the sun is common for everyone, right? फॉर्मूले में mass of sun तो सेम ही जी, रहेगा ना. So closer you are, smaller is your directly proportional हो आप. Smaller is your r, less is your t. ठीक है। That's what you meant, right? हम्म, या Going to the next page. Okay.
बताना है ए सन है या बी सन है। सर मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए सर। ए होना चाहिए तो स्पीड ऑफ प्लैनेट इज ग्रेटर एट सी, तो वो तो सन के नेर होती है फास्टर तो। एक मिनट, लीन, अच्छा इन, अच्छा ये गिवन है। एंड यू शुड नो हाउ टू डू इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस। ये ठीक, तब आती है जब आप एंट्रेंस के क्वेश्चन करना शुरू करोगे। बट अच्छा, फिर बी होना चाहिए सर, तो अगर यस, सी के मैक्सिमम। क्या आंसर है? बी। या बिकॉज दिस इज क्लोजर राइट, एंड देन यू शुड राइट द होल थ्योरी। ठीक। जस्ट डोंट से बी ऑन सी, राइट कंप्लीट explanation. हाँ जी। कैप्लर सेकंड एरियल ऑफ Yeah, एरियास। angular momentum is constant, so r is very small, so v will be very high. Here, farther it is, lower is the velocity. Since r is very high, velocity will be lower. ये मीट करता है रिक्वायरमेंट केप्लर्स की। जोहान्स केपलर। ये कौन था भाई? अरे केपलर का नाम ही है जोहान्स केपलर। ओके। जर्मनी का। एक एस्ट्रोनॉमर और एक मैथमेटिशियन। ओके, छोटा होगा। एग्जैक्ट ठीक है। वैल्यू निकालने को बोला है, छोटा बड़ा नहीं पूछा। वो साइज क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ अर्थ, आर की टर्म्स में? एक है टीई और एक है टीपी। यस, स्क्वायर स्क्वायर। It is twice as fast. So its time टी period स्क्वायर is और p cube. टीपी इज ट्वाइस एज फास्ट, तो यानी कि 4। Fast. फोर कैसे? उसमें तो स्लो गया या डबल टाइम लग गया उसको। देयर एग्जिस्ट अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज अर्थ। टीपी इज फास्टर टू का मतलब टाइम्स ज्यादा टाइम लगना होता है। इफ आई रन ट्वाइस एज फास्ट एज यू, व्हाट इज माई वन वेलोसिटी? बाय फोर। हाँ भाई, इतनी इंग्लिश खराब नहीं होनी चाहिए। अब क्यूबिंग आएगा ना कम। both the sides, and so taking cube roots। यस। और उसका क्यूब रूट क्या होता है?
ठीक है। तो बड़ा निकला। बहुत बड़ा निकला। फिर तो कैलकुलेशन इज रॉन्ग। 1/1.6 होगा। यू कैलकुलेटेड 1/1.6, 1/1.6। So 10/8, 10/16, 5/8. comet orbits the sun in an highly elliptical. कॉमेट मतलब एक प्लैनेट ही हो गया और क्या, अगर ऑर्बिट कर रहा heavenly body. है। कांस्टेंट लीनियर स्पीड होगी एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो मेरे हिसाब से कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। राइट। काइनेटिक मल्टीपल एनर्जी विल चेंज, GMM/r भी चेंज। क्यों, ये भी तो कांस्टेंट रहेगा F। नहीं, इसमें दो है क्या, एक से ज्यादा है क्या? ठीक है। F भी तो सेम रहना चाहिए। व्हाई विल F चेंज, नहीं हु यार, इज डूइंग एक्सटर्नल वर्क? सी एन एफ। प्लैनेट की एनर्जी थोड़ी ना बदल जाएगी। नहीं, सी एन एफ है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। एंड द टोटल एनर्जी, राइट। कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट क्वाइट अ लॉट। एक मिनट, मैक्सिमम। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ये मुझे पता है, ये वाला पूछते हैं ये।
I think so. MVR, conservation of angular momentum. एमएम तो कट ही जाएगा। सर 3000 मीटर्स पर सेकेंड। नो आइडिया यार, आंसर नहीं पता। आगे। लेट मी चेक। 12 मीटर पर सेकेंड। गलत किया मैंने। हम्म। गलत करा मैंने। MVR इज इक्वल टू MVR। करना क्या था इसके अंदर? M सेम है, और अ, एक V भी निकालनी है, दूसरी निकालनी है फारदेस्ट पे। फारदेस्ट इज 8, 8 वाले पे निकालनी है, तो 60 से तो कम ही आएगी। और दिख भी रही है प्रोडक्ट 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स कम होगी, 12 होगी। करने की भी जरूरत नहीं है। द डिस्टेंस इज 5 टाइम्स 1.6 और 8 में, तो वेलोसिटी 1/5 होगी जो फारदेस्ट पे है। तो अगर 60 दिया है नियरेस्ट पे, तो फारदेस्ट पे 12 होगी। रेशियो प्रोपोर्शन से मालूम चल गया, इनवर्स रेशियो। ओके। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आ गया। मैंने गड़बड़ कर दी था कुछ। ये लगाना था यार। मैंने भी वही लगाया था, वो कुछ गड़बड़ हो गया था ये कैलकुलेशन। फारदेस्ट था, ये नियरेस्ट था यार। हाँ हाँ, हो ये गया नियरेस्ट मेरा। की थी, उल्टी लिख दी होगी। हाँ, उल्टी लिख दी थी मैंने। गलती। नियरेस्ट के साथ फारदेस्ट की वेलोसिटी। हाँ। ठीक है, आई थिंक वी डन विद, लेट्स मीट टुमारो एंड कंटिन्यू टू डिस्कस। रैंडमली कल रैंडम क्वेश्चंस करेंगे दोनों चैप्टर से।